everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture, we will going to study about role of nanobiotechnology in pharmaceutical field. So, student, this lecture is again very much important for students who all are preparing for pharma interview training. So, let's get started with the topic and let's see what is the role of nanobiotechnology in pharmaceutical industry. So, nanotechnology is the study of very small structure. I hope you have studied about nanotechnology. So, जो nanotechnology है एक ये स्टडी है जहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, राइट, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर. So, the pharmaceutical industry, so in pharmaceutical industry, nanotechnology deal with the formation and development of structures like atoms, molecule or compound of size zero point 0.1 to 100 nm into a structure which can be further developed into special devices with desirable characteristics and properties. सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी का ये रोल होता है कि यहाँ पर ये बहुत ही छोटे छोटे से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं. अब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का मतलब लाइक जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया या कंपाउंड्स हो गया. मेनली जो इनका साइज रहता है वो 0.1 टू 100 nm रहता है. और ये इसमें वो प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट होती है या वो स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है जिसमें आप अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये क्या करता है, ये किसी भी मटेरियल का एरिया को, मतलब कह सकते हो सरफेस एरिया किसी भी मटेरियल का इंक्रीज कर सकता है. और ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है कि मोर एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करें विद अदर मटेरियल्स के साथ. देन द एप्लीकेशंस ऑफ nanotechnology into pharmaceuticals helps in the formation of more advanced drug system, and so it is an important and powerful tool as an alternative to conventional dosage form. Pharmaceutical nanotechnology is a specialized field which will change the fate of pharmaceutical industry in near future. अब ये इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? अगर देखा जाए तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, दे आर हेल्पिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ मोर एडवांस्ड ड्रग डिस्कवरी सिस्टम, कह सकते हो ड्रग डिलीवरी सिस्टम की फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एज एन अल्टरनेटिव है टू द कन्वेक्शनल डोसेज फॉर्म, or like in near future it will help the pharmaceutical industry in various ways. So pharmaceutical nanotechnology helps to fight against several diseases by detecting the antigen associated with diseases, and also by detecting the microorganisms and viruses causing diseases. So how they are helping? तो जो फार्मा बायो नैनो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट, और कह सकते हो टू अ सेवरल डिजीजेस. और कैसे? बाय डिटेक्टिंग द एंटीजन एसोसिएटेड विद डिजीजेस, एंड ऑल्सो बाय डिटेक्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस कॉजिंग डिजीजेस. Pharmaceutical nanotechnology plays a very key role to overcome several drawbacks of conventional dosage form for like capsule, tablets, etc. The conventional form suffered with the drawbacks like low bioavailability, poor patient compliance, damage to healthy cells, etc., which were rectified using pharmaceutical nanotechnology. तो जो कन्वेक्शनल फॉर्म्स था इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, तो उसको ओवरकम कर लिया है किसने? नैनो टेक्नोलॉजी में. ये क्या करता है कि ये जैसे जो उसके ड्रॉबैक्स थे कन्वेक्शनल फॉर्म के, जैसे कि लो बायो अवेलेबिलिटी था, पुअर पेशेंट कंप्लायंस था, हेल्दी सेल्स को डैमेज कर देते थे, तो उन सब चीज़ों को
फार्मास्यूटिकल नैनोटेक्नोलॉजी ने रेक्टिफाई कर लिया है. नाउ कमिंग टू द फार्मास्यूटिकल नैनो सिस्टम. The first is polymeric nanoparticles. They have a size range of 10 to 1000 nm and are biocompatible and biodegradable, providing a complete drug protection. Polymeric nanoparticles are used as a carriers for controlled and sustained a delivery of drugs. सो जो नैनो पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स हैं, इनका अगर हम साइज़ की रेंज की बात करें तो 10 to 1000 nm है. एंड दे आर बायो कंपैटिबल है, बायोडिग्रेडेबल है, जो कि इन दो के वजह से ये क्या करता है, एक ड्रग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं एज अ कैरियर फॉर कंट्रोलिंग or sustain a delivery of drugs. Then comes the dendrimers. Dendrimers have a size of less than 10 nm and are produced by controlled polymerization. तो जो dendrimers होते हैं, they have a size that is very less than 10 nm and are produced by controlled polymerization. These are highly branched nano monodisperse polymeric system. Dendrimers are used for controlled delivery of drugs and are targeted delivery of drugs to macrophages and liver. Then comes the metallic nanoparticles. So now talking about the metallic nanoparticles, so they are gold or silver colloids होते हैं. They have a size जो कि of you can say less than 100 nm. They are very small in size, resulting in more surface area to have more bioavailability and sustainability stability, which is ideal characteristics of the drugs. As already told कि जो bio nano particles है, nanotechnology है, what they are doing, they are increasing the surface area for the drug. अब यहाँ पर जो मेटालिक नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कि मेनली गोल्ड हैं या सिल्वर के कोलाइड्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव अ साइज ऑफ वेरी लेस देन 100 nm, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है. जहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो जो एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है उसको वो अचीव कर रहा है. आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बायोअवेबिलिटी. ठीक है. These are drugs used for drug and gene delivery and are used in sensitive diagnostic assay, thermal elevation and radiotherapy enhancement. So ये क्या है? They are used in metallic nanoparticles. कहाँ used होते हैं? They are used for drug and gene delivery. और ये सेंसिटिव डायग्नोस्टिक जैसे ऐसे हो गया, वहाँ पर हेल्प करते हैं. थर्मल एवेलेशन में हेल्प करते हैं. रेडियोथेरेपी एनहांसमेंट में हेल्प करते हैं. देन कम्स द पॉलीमेरिक माइसेल्स. they have a size range of 10 to 100 nm with a high drug entrapment nature and biostability. These are a high diagnostic value and are used for active and passive drug targeted drug discovery. Then comes the liposomes. अब जो liposomes होते हैं, they are phospholipids vessels with a range of 50 to 100 nm with the features of good biocompatibility and entrapment efficiency. These are used for passive and active delivery of gene, protein and peptides. अब आता है कि हमारा फार्मास्यूटिकल्स नैनो मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. नाउ कमिंग टू नो वी हैवंट. So there are various material which play a very important role in pharmaceutical nanotechnology. So कौन से हैं? The first is nano material. These are a biomaterial which are used for surface modification or coating, helping in enhancing the biocompatibility and bioavailability of various other materials. So nanoparticles is the first material. जो क्या है? तो ये एक बायो मटीरियल है जो इंक्रीज करता है सरफेस मॉडिफिकेशन को यूज होता है
कोटिंग में हेल्प करता है और बायोकम्पैटिबिलिटी को इन्हेंस करता है, साथ ही साथ बायो अवेबिलिटी को इन्हेंस करता है वेरियस अदर मटेरियल की. Then the second is nanocrystalline material. So these are manufactured to act as a substitutes for the material which have a poor characteristics like bioavailability and solubility. तो ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ होते हैं जिन मटेरियल्स के पास पुअर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बायोअवेबिलिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, एक्सेट्रा. देन आता है नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल. सो these are processed form which special shapes and functionality, some of which includes nano and chemical, mechanical system, microfluids and microarrays. So these three are the materials that are used in pharmaceutical industry. If we talk about the application, then the first application is drug discovery system, second is diagnosis and third is drug discovery. तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? द फर्स्ट इज ड्रग डिस्कवरी सिस्टम. सो जो कन्वेंशनल ड्रग डिस्कवरी सिस्टम है, they have a very limitation of lack of specificity and greater rate of drug metabolism. तो उसकी प्लेस पे हमारी ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है. सो जैसे कि ग्रेटर रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है, साइटोटॉक्सिसिटी है, हाई डोज रिक्वायरमेंट है, पुअर पेशेंट कंप्लायंस एक्सेट्रा. तो इसको ओवरकम किसने किया? ड्रग डिस्कवरी सिस्टम ने, जो कि फॉर्मुलेटेड है बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल इन फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी. तो वहाँ पर ड्रग डिस्कवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम यूज़ हुआ. Then the second is diagnosis. Molecular imaging is the science of characterizing and quantifying biological process in organism, which include gene expression, protein-protein interaction, signal transduction, cellular metabolism, and both intracellular and intercellular trafficking. Then the last is drug discovery. Pharmaceutical nanotechnology plays a very important role in drug discovery and development as it helps in improving the characteristics such as solubility, bioavailability, etc. of the potent drug and excipient, etc. So these three are the application of pharmaceutical industry in nanotechnology. Now let's study about the nanotechnology. So how they, what they are doing, they are increasing the throughput, improve identification and validation of target proteins and drug level. Second is it is reducing the time for identification of new drug. Second is reduction of precious reagents required to screen potential drugs. Then improve the visualization of drug interaction, and the last is improved understanding of chemicals at cellular as well as a molecular level. So these are certain application that is there in nanotechnology, how they are working. Now comes to the conclusion. Pharmaceutical nanotechnology has a new scope of the study with a better opportunities in different areas of the diagnosis and treatment. Pharmaceutical nanotechnology has developed as a new area of interest, having a great potential as a carrier for many potent drugs and diagnostics. It is a well established as a specialized area for drug discovery, delivery, diagnostic, and prognostic and treatment of the diseases through its a nano engineered tools. And last is it provides the opportunity to improve materials, medical devices, help to develop a new technologies and overcome the limitation of conventional techniques. So this is all about the use of nanobiotechnology in pharmaceutical industry.
So in this lecture we have covered the introduction, what is nanotechnology, and second thing what we have covered, the application of nanotechnology in the pharmaceuticals. Second, we have also discovered, oh sorry, we have also learned about the sizes of the nanoparticles. Then we have covered the pharmaceutical nanosystem, that is a polymeric and nanoparticles. Second is dendrimers. Then we have covered the pharmaceutical nanoparticles, that is nanomaterials, nanocrystalline materials, nanostructured materials. And at last, what we have covered, the application of pharmaceutical nanobiotechnology. So these all we have covered in this lecture. Hope you have understood the lecture. Please, student, don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. Thank you. Please do like, share, and subscribe. Thank you.